ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की मेहमान डॉक्टर अरीबा खान इज़ एन MBA PhD in Islamic Finance. She is a specialist in Islamic finance and banking. Besides these, her area of expertise are Shariah Law, corporate governance, and portfolio management. Presently, she is the CEO of Taqwa Invest, Dubai, which she co-founded in 2021. Besides these, she is associated with London Ratings UK, Zoya Finance New York, Adla Advisory, and Ethis Kuala Lumpur, Malaysia. And now the very impressive part of her CV. She has been included in the women list of most influential women in Islamic business and finance, and has been recognized as the women CEO for 3 years in a row now, 2021, 2022, and 23 by Cambridge IFA. And she has also featured in very prestigious Forbes magazine. Assalamu alaikum, welcome, and वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया हरीबा। वालेकुम सलाम। नहीं नहीं ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि अपने अलीगढ़ की कम्युनिटी को हम लोग वक्त दें एंड डेफिनेटली डिस्कस करें कि क्या मार्केट में चल रहा है एंड कैसा हमारा दौर था डेफिनेटली। Thank you. Ariba, featuring in Forbes magazine is quite something. और ये कि हम ये जानना चाहेंगे कि आपका तालीमी और प्रोफेशनल सफ़र कैसा रहा। मुख्तसर तौर के ऊपर आपने 2019 में गालिबन डॉक्टरेट मुकम्मल की और तब से अब तक सिर्फ 5 सालों में आपने इतनी तरक्की की है माशाल्लाह कि आपने कंपनी बना ली है, CEO बन गई हैं। तो सवाल ये है कि अरीबा इतनी जल्दी क्या है, मतलब T20 खेल रही हैं, जल्दी जल्दी सारा काम जो है वो कर लेना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो इसमें जो है बस अल्लाह की देन थी एंड ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था एंड अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जल्दी जल्दी हो गया एंड एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने तो एक्चुअली जब मैं PhD कर रही थी आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एक दुबई में आके कंपनी स्टार्ट करूंगी एंड आई बी सिटिंग ओवर हियर ओनली क्योंकि जब 2019 में मैंने PhD की थी तो उसके फ़ौरन बाद मैं यहाँ पे जॉब सर्च के लिए आई थी। तो उस वक़्त मेरा विज़न था कि हाँ, DIFC में काम करेंगे एंड यहीं पे काम करेंगे सिर्फ़। ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे कंपनी बनाएँगे और DIFC रजिस्टर्ड एंटिटी होगी। इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट शरिया कंप्लायंट रोबो एडवाइज़र्स रजिस्टर्ड इन द DFSA एंड रेगुलेटेड बाय द DFSA। सो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो बहुत मुश्किल भी था डेफ़िनेटली बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी टू सेट अप अ कंपनी और वो भी ऐसे मुल्क में जहाँ आप ना रहे हों, ना बड़े हुए हों, ना पढ़े हों, ना काम किया हो। So it was very difficult, definitely. Then obviously I had the support of my co-founder, and actually she was there with me since the school days. We did our PhD also together. तो अल्हम्दुलिल्लाह साथ मिलके बनाई एंड अब जहाँ हैं अब इससे भी अभी तो बहुत लंबा है हमारा पाथ सो अभी तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग सो इंशाल्लाह you'll see And more features who is your soon. partner in this company, जिनका आपने अभी जिक्र किया? So, yeah, so her name is Farah Hashim. So she was with me since class 11th. We did the BA together, MBA together, then the PhD also together. So we both are doctorates actually. So I should have had both of you together, I think. Yeah, I know. Had I known this earlier, तो मैं उनको भी इनवाइट करता। तो जी अच्छा, अरीबा, एक साल आपने MBA करने के बाद एक्सिस बैंक में मैनेजरियल जॉब की और फिर उसके बाद 3 साल लेक्चरशिप की। तो उसके बाद फिर ये फैसला किया कि भाई PhD करनी है और इसमें अपना करियर बनाना है। तो सवाल जहन में ये आता है कि बड़ी कंफर्टेबल सी एक जर्नी होती है लेक्चरशिप AMU में, बड़ी बादशाहत की नौकरी होती है और उसमें स्काई इज़ द लिमिट। आप माशाल्लाह यंग हैं तो यू कुड हैव अटेन्ड हाइट्स ओवर देयर आल्सो। तो ये फैसला क्यों किया कि भाई लेक्चरशिप छोड़ करके और फिर कॉर्पोरेट बिजनेस में जाना है? देखिए सबसे पहले तो जब MBA के बाद मैंने एक्सिस बैंक ज्वाइन किया था सो इट वाज जस्ट लाइक अ फ्यू मंथ्स जर्नी बिकॉज जब मैं वहाँ वर्क कर रही थी आई टेल यू एन इंसिडेंट लाइक व्हाई आई मूव टू इस्लामिक फाइनेंस। ऑल्सो मैंने लेक्चरशिप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ PhD की थी सो
that was an honor for me कि मुझे subjects दे दिए गए थे lectureship के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही during my PhD for 3 years. I अच्छा, taught it आप कहाँ पढ़ा रही थी? बिजनेस इसमें एमबीए business डिपार्टमेंट? administration में जी जी अच्छा जी अच्छा 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 अच्छा, गुड। वहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग का पीजी कोर्स होता था तो आई यूज टू टीच दैट उसमें इस्लामिक इकोनॉमी और इस्लामिक फाइनेंस एंड इस्लामिक स्टॉक्स so that was definitely an honor and thanks to my supervisor actually his name is Dr. Asif Akhtar and it is because of him where I am today definitely so he motivated me a lot कि नहीं you can do better you can do best so यस तो आपका सवाल था कि जब मैंने एमबीए के बाद एक्सिस बैंक ज्वाइन किया सो आई वाज सिटिंग एट द डेस्क एंड मेरे पास एक कस्टमर आता है एंड यू नो इन बैंक्स द जॉब इज बेसिकली टू सेल इंश्योरेंस एंड सेल प्रोडक्ट्स ट्रू। so it was a Muslim guy, a poor guy, not a wealthy person. So मैंने उसे कहा कि why don't you get insurance, life insurance? वहां से he replied, madam, it's not halal. So I was quite surprised कि अब आप सोचिए कि मैं एमबीए हूँ एंड मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता है कि क्यों उसने ये चीज कही कि इट इज नॉट हलाल so then and there I had this thing in my mind what I'm doing is not right I need to change this thing and मैंने डॉक्टर आसिफ अख्तर को फ़ोन किया आई थिंक सो नेक्स्ट डे ही फ़ोन किया था मैंने उनको कॉल करके कहा कि सर आई वांट टू लर्न समथिंग इन इस्लामिक फाइनेंस लाइक व्हाट इट इज़ एंड अगर पीएचडी की ओपन हुई पोजीशंस इन फाइनेंस आई वांट टू डू इट इन इस्लामिक फाइनेंस पर्टिकुलरली उसके 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल बैक की एंड ही सेड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो वी आर लॉन्चिंग फॉर द फर्स्ट टाइम पीएचडी इन इस्लामिक फाइनेंस एंड अगर आपको करना है start preparing it for it and give the test and why not so मैंने उसके फौरन बाद मैंने एक्सिस बैंक छोड़ दिया and obviously it was a very tough decision क्योंकि इनकम सोर्स बंद हो जानी for few months and उसी वक्त नई नई इनकम आ रही थी so it was nice but then मैंने अपनी जॉब छोड़ दी and I started working with Al-Barkat Institute for like few months during the course जब मैंने preparation कर रही थी PhD की so I started working over there then मेरा PhD में selection हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उसी year ही and I started working on the Islamic finance I got the option to move to conventional finance but मैंने नहीं किया because you know the reason कि मेरे अब दिमाग में बैठ गया था no I have to learn about Islamic finance so it was a very difficult decision because मैं एक conventional background से आ रही थी so I had to learn like the basics of Islamic finance first and then move to Islamic stocks learn how the stocks are Sharia compliant so it took me alhamdulillah 2 years to complete the PhD I did the pre-submission in 2 years एंड मेरा फाइनल सबमिशन 2019 में हो गया था एंड मेरा एडमिशन हुआ था एक्चुअली 2015 के एंड में इट वाज लाइक दिसंबर एंड उसके बाद बस अल्हम्दुलिल्लाह द जर्नी वाज लाइक क्विक वही T20 जो आप कह रहे हैं वो तभी से शुरू हो गया था मेरा T20 कि जल्दी जल्दी हर चीज़ करनी है बस बहुत इंस्पायरिंग कहानी है कि हाँ होता है कभी कभार एक 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 वाकया जो है वो पूरी सोच बदल देता है और फिर मुकद्दर भी बदल देता है। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया कि इस्लामिक फाइनेंस में आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई और फिर आपने इस पे क्यों रिसर्च किया। तो अच्छा ये है कि आप चूँकि पीएचडी हैं इस्लामिक फाइनेंस में तो बहुत सारे सवालात इसी से मुताल्लिक़ डिस्कस होते आए हैं लोगों के जहनों में हैं और उसके कोई बहुत ज़्यादा क्लियर कट जवाब मिले नहीं हैं। इसके बारे में मैं 2 कोट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ इस्लामिक फाइनेंस के बारे में। एक तो बैंकर हैं उन्होंने लिखा है और एक और साहब जो फाइनेंस से रिलेटेड ही हैं वो कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज इस्लामिक बैंकिंग। Profit, rent and rent are just profit rate and rent are just codes for riba or interest which is not permissible. और दूसरा कोट ये है कि Islamic banking is 100% a sham. I used to work in banking and took a course to learn how Islamic banks work and honestly all they have done is changed interest to rent. So how would you address these allegations? Yeah, this is actually a very interesting question because ये मुझसे पूछा गया था शुरू में भी when we were starting this entity and also I missed one of your question actually
why I moved from academics to corporate and why did I leave my comfort zone. So वो मेरा सवाल का मैं जवाब दूंगी पहले कि राइट। डेफिनेटली कंफर्ट जोन से अगर नहीं निकलता इंसान तो सीखता नहीं है। वो फिर आराम से अपनी जिंदगी वहीं गुजार रहा होता है एंड सुकून से रहें और लेक्चरशिप करें, घर आए आराम से बैठें। सो दिस इज नॉट व्हाट माय पर्सनालिटी इज, बिकॉज आई हैव बीन लाइक दिस ओनली कि मुझे जल्दी जल्दी करना है और कुछ ज्यादा अचीव करना है। सो दैट इज व्हाई आई मूव फ्रॉम एकेडमिक्स टू कॉर्पोरेट, बिकॉज मुझे लग रहा था कि कॉर्पोरेट हैज growth. Definitely, because you can become a CEO definitely, and either you can become an assistant professor, max to max a vice chancellor, and then you have to retire. Over here, you can continue working till the time you're alive. So definitely, that was one of the reasons why I wanted to move from academics to corporate. And बड़ी फलसफाना सोच है एंड इट्स वेरी अनलाइकली कि इतनी यंग एज में इस किस्म की सोच रखना और फिर उस पर अमल करना, ये वाकई काबिल तारीफ बात है। तो यस प्लीज गो अहेड। yeah, so regarding the Islamic banks, जी। so ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया है कि what is this profit rate? Is it the same thing as interest rate? So the difference है difference. It is a major difference. So when you deposit your money in the bank does not keep the money in their safe. वो invest होता है आगे, either given for loan or invested. In Islamic banks, they invest in Sharia compliance stocks and make sure कि वो जो लोन वगैरह भी दे रहे हैं that is being done in a Sharia compliant manner. अब जब उससे प्रॉफिट जो आएगा that is halal. That is not interest. But conventional bank में they don't care about Sharia compliance, obviously. They just invest, give loan wherever they want to, and उससे वो interest से वो जो बनाते हैं profit, that's what they give you back in the form of an interest rate. So this is like the major difference. कि वो जो profit rate और interest rate है वो difference है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, देखिए जो हमारी बड़ी नाइव सी नॉलेज है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन डेप्थ मालूमात नहीं है, लेकिन हमें जो पता चला है वो ये है कि किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस का बराबर बराबर ख़तरा नहीं है, तो वो जायज़ नहीं है। अब बैंक में जब आप जमा कर रहे हैं तो उसमें आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो तो सेफ है, तो फिर मतलब ये कैसे ये जायज हुआ? देखें ये जायज़ होगा बिकॉज जब आप बैंक्स में यहाँ पे इस्लामिक बैंक्स में स्पेशली अकाउंट खोलते हैं, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वेर इन दे टेल यू क्लियरली वी आर गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स, वी आर गोइंग टू शेयर द लॉस। इट्स लाइक फुल शेयर, नॉट लाइक 20% आप रख लें 80% हम रख लेंगे। that's not the scenario over here. And that is why इस्लामिक बैंक्स में जो है यही मेजर डिफरेंस है कि they make sure the profit sharing is there. So देखिए Islamic finance के जो है 5 principles हैं basic. Number 1, you have to make sure that the investment or the products are halal. Number 2, you have to make sure that profit sharing is there. Number 3, you have to make sure that whatever you earn, if it is non-Sharia compliant, you need to give it away. Like you need to purify your wealth. That is a very important concept. अगर आप investments भी देखेंगे, अगर आजकल जो ना बहुत ट्रेंड हो गया है ये शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स का, तो बहुत लोगों को अब नॉलेज हो गई है कि व्हाट इज डिविडेंड प्यूरिफिकेशन। इसमें जो होता है कि अगर आपने सपोज करें इन्वेस्ट कर दिया नॉन हलाल एंटिटी में, अब वो जो है फुल्ली नॉन कंप्लायंट है, उसके पास जो है नॉन हलाल एक्टिविटीज भी हैं। मैं एग्जांपल दे लेती हूँ एक, फॉर एग्जांपल गूगल हैज यूट्यूब म्यूजिक एंड ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स व्हिच आर नॉन हलाल। इसमें जो है हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट यू नीड टू प्योरीफाई या कितना परसेंट रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग फ्रॉम दीज आइटम्स व्हिच आर नॉन हलाल। उसके बेसिस पे जो है हमें एक वैल्यू मिलती है which you need to give away in the form of dividend purification. अगर आपने वो give away कर दिया, then your income is halal. In the case of Indian banks also, like ये concept है, when you receive interest, you just give it away. Without even thinking कि उससे आपको कुछ reward मिलेगा या you're just giving it away for sadqa और zakat. You don't have to give it away for sadqa zakat. You just have to give it away. बस ये सोचें कि वो आया ही नहीं था आपके पास.
ये प्यूरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस्लामिक फाइनेंस में, एंड दिस इज हाउ people make sure that their money stays halal. अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी शरिया बॉडी से एंडोर्स्ड है, मतलब यानी। Yes. So Accounting Association of Islamic Finance जो है बहरीन में, अच्छा, they have endorsed this. Yes. अच्छा। लेकिन वो बेसिक बात तो वही रही कि प्रॉफिट तो आपको आना ही आना है, उसमें क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि। तो आना देखिए, है। वो प्रॉफिट जो है वो वहां से आ रहा है। अगर आप इस्लामिक बैंक में, आपने बैंक में पैसा डाला हुआ है हम्म, और उस बैंक ने जो है आगे इन्वेस्ट किया है किसी शरिया कंप्लायंट एंटिटी में, हम्म, तो वहां से तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एंटिटी जो है वो भी तो प्रॉफिट बना ही रही है किसी न किसी तरह से। हम्म। But that company is actually Sharia compliant. It's been marked as Sharia compliant by the Sharia advisors. अच्छा, And उससे जो profit आएगा, that is halal. That is not haram. अच्छा। And that is fine. जी। चलिए। जैसे डिविडेंड में भी ये होता है कि जब डिविडेंड आती है, तो just a certain percentage has to be given away. Not the full dividend has to be given away. हम्म, अच्छा। तो वो certain percentage ही होती है। ये हमारे लिए बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है, तो ज़्यादा गहराई में हम इसमें नहीं जाएंगे। तो आपसे अगला सवाल हम ये पूछेंगे। देखिए, आप चूँकि शरिया लॉ में भी आप एक्सपर्टीज़ है, तो जहाँ तक हमें पता है कि इस्लामिक मॉनेटरी सिस्टम जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर यानी दरहम और दिनार में ट्रेडिंग को एनकरेज करती है, जो कि अब नहीं है। तो हम्म। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आपका भी इस्लामिक बैंकिंग जो है वो लिटरली वर्चुअल मनी में ही डील करता है। तो वर्चुअल मनी जो है वो, आई मीन, हाउ डू यू रिकंसाइल दीज टू कॉन्सेप्ट्स, यानी So जी। आजकल when we say virtual money, people think of Bitcoin and cryptocurrency. That's number one. And इन चीजों में अभी भी there are like conflicts among the Sharia scholars. हम्म, They don't just call it Sharia compliant till today. हम्म, They still have conflicts. इसके reason ये है हम्म, कि in especially in cryptocurrency, there are जी, Ponzi schemes हम्म, wherein they are just fooling people. They are just have some scams or something else involved with them. So हम्म, उसमें you need to go into the details. अब अगर आप क्रिप्टो ही देखें सिर्फ, या डीफाई देखें, there is USD Tether, USDT है एक क्रिप्टो, wherein you can invest and that is Sharia compliant. उसका reason ये है because it is pegged by a currency. हम्म, USD से pegged है। हम्म, अगर कुछ चीज पेग्ड नहीं है करेंसी से, there is no involvement of a currency in between, अच्छा, then you need to go into the details and search कि इसमें कोई पॉन्जी स्कीम तो नहीं थी, इसमें कोई और इश्यूज तो नहीं है, like where is the money going, where is it coming from. हम्म, तो एक्चुअली मैंने ये रिसर्च की थी when I was working with Zoya Finance. It is a US based Sharia compliant entity. इसमें शरिया स्क्रीनिंग होती है. So I was the research analyst over there, and I used to like do the screening for stocks as well as cryptos. हम्म, So उसमें बहुत सारे cryptos थे. Like it's available. It's a public knowledge which is available on Google also. Like you can search कि अगर इस क्रिप्टो में Ponzi स्कीम है या नहीं है. हम्म, उससे डिसाइड हो जाता है कि ओके दिस इज नॉट शरिया कंप्लायंट. देखिए, एक तो गवर्नमेंट बैक्ड हो और करेंसी पेग्ड हो और उसमें जो है ना प्रॉपर रेगुलेशंस हो, हम्म। देन ओनली इट्स फाइन, अदरवाइज इट्स नॉट फाइन. एंड नहीं, स्टिल देयर मेरा, आर. आई मीन, मे बी आई हैव नॉट पुट अप द क्वेश्चन। वर्चुअल मनी से देखिए, क्रिप्टो करेंसीज या बिटकॉइन या ये सब चीज़ें ठीक है, वो भी हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा भी जो बैंकिंग में जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि हमारे जो पैसे हैं बैंक में जमा हैं, हमारे पास एक अदद कार्ड है या इंटरनेट के ऊपर आपका बैंक स्टेटमेंट है, तो भी वो तो वर्चुअली है ना, हमारे हमने फिजिकली अपने पैसे को नहीं देखा है ना। जी. तो वो जो है ये जो इस्लामिक गवर्नेंस है इसके मुताल्लिक वो यही कि भाई, यहाँ तक एक बहुत इंटरेस्टिंग आपसे मैं एक वो वाक़या शेयर करूँगा कि रिसेंटली किसी खुतबे में हमने सुना था कि वाइल यू आर ट्रेडिंग गोल्ड, तो अगर आप अक्सर ऐसा करते हैं ना कि पुराना गोल्ड दे करके और फिर उसकी जो वैल्यू होती है और उसमें कुछ पैसे मिलाकर या घटाकर आप दूसरा ले लेते हैं, तो उसमें भी रूलिंग ये है कि फर्स्ट यू हैव टू सेल इट, गेट द मनी, एंड देन यू बाय द न्यू वन। ऐसा नहीं है कि आपने उसी में जो है वो
उसी की ट्रेडिंग आपने जो है वो कर ली। तो ये सवाल मेरा ये था कि वर्चुअल मनी तो हमारा, यानी हमें पता नहीं है कहाँ है हमारा पैसा। एग्जैक्टली। तो वर्चुअल मनी डेफिनेटली हमें नहीं पता। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक तो नहीं दिखाती है कि ये आपका पैसा ये पूरा का पूरा ये सामने रखा हुआ है। दैट सही। इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज नॉट हाउ द बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट्स नाउडेज। हम्म। एंड इस्लामिक फाइनेंस हैज टू अडेप्ट द करंट पॉलिसीज, द करंट वे ऑफ डूइंग बैंकिंग इन द वर्ल्ड। हम्म। बिकॉज अगर हम ट्रेडिशनल वे में रह जाएंगे तो देयर वोंट बी एनी कस्टमर्स कमिंग इन। हम्म। अगर आप सिर्फ गोल्ड और डिनार में रह जाएंगे, यू वोंट फाइंड कस्टमर्स because everybody needs a debit card, but there is an issue with the credit card because credit card it's not halal ट्रू। because इस्लाम भी कहता है कि अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के आपको नहीं लेना चाहिए कुछ भी चीज। सो करेक्ट। क्रेडिट कार्ड गिव्स यू द ऑप्शन कि अपनी हैसियत से बढ़ के आप कुछ ले लेते हैं एंड देन यू स्टार्ट पेइंग इन ईएमआईज। So करेक्ट। credit card is definitely a problematic thing, but still some of the Islamic there are some banks which are giving Islamic credit cards also. So they have to adapt the current the current way the world is working. हम्म। They cannot be like traditional अभी भी हम्म। because अब तो you can't trade like एक exchange में आप कुछ और तो नहीं दे सकते। अब वो वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। हम्म। So हम्म। जो हाँ, exchange तो system। मतलब बॉटम लाइन ये है कि कहीं ना कहीं पे जो है वो छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज तो है। Exactly. और उसमें ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें मालूम पड़ी थी कि जब ये बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था तो अगर आप $20, उसमें प्रॉमिस था कि इसमें आप इसको रिडीम कर सकते हैं, तो $20 का नोट अगर आप बैंक में देंगे तो इट इट प्रॉमिस टू गिव यू 1 ounce ऑफ गोल्ड। तो हम्म। वो धीरे धीरे जो है वो भी फेज आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल तो कहानी में खैर नजर आता है। तो जी। खैर बहरहाल अरीबा, ये एक सवाल ये है कि इस अनसर्टेनिटी और इनसिक्योरिटी के दौर में बैंकिंग सिस्टम भी इस दायरे में बहुत शिद्दत के साथ आता है और बहुत सारी थ्योरीज वही पेपर करेंसी को लेकर हैं। हमने माजी में देखा कि शायद आपको इल्म हो या ना हो, हमने जब स्टूडेंट थे पढ़ा था, देखा था बल्कि, कि एक बड़ा ज़बरदस्त बैंक यहाँ पे मिडल ईस्ट में स्टार्ट हुआ था, बैंक ऑफ क्रेडिट कॉमर्स इंटरनेशनल, बीसीसीआई। और जब सारा पेट्रो डॉलर उसमें आने लगा और वेस्ट की बैंकिंग सिस्टम थ्रेट हुई तो उसको ओवरनाइट उन्होंने जो है वो बैंकरप्ट कर दिया एंड पीपल लॉस्ट देयर फॉर्च्यून्स और बहुत सारी नौकरियां जो है वो ख़त्म हो गई। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन के दौर में भी हमने ये देखा कि भाई सरकार ने एक फैसला लिया और लोग यानी अपने पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी कतारों में और किस किस कदर फजीहत उनकी हुई। तो ऐसी बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स हैं। अभी भी बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए हैं, बैंकरप्ट हुए हैं। तो फिर हाउ रियल इज दिस थ्रेट टू योर मनी विच इज इन 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 द बैंक्स, और उसको उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो डेफिनेटली देयर इज अ थ्रेट बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हम्म। बैंक डजंट शो यू कि ये पैसा यहाँ रखा हुआ है आपका। इट्स नॉट इन अ सेफ, हम्म। इट्स इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। या हम्म। पे वो लोन के फॉर्म में दे दिया जाता है। सो वेरियस गवर्नमेंट्स दे हैव इंट्रोड्यूस्ड डिपॉजिट क्रेडिट स्कीम्स which insures your money. अब फॉर एग्जाम्पल किसी हम्म। के पास 1 करोड़ है, हम्म। ठीक, एंड उसने जो है 10 बैंकों में अकाउंट खोल रखा है हम्म। एंड उसके साथ एक जॉइंट अकाउंट होल्डर है। अब हर बैंक में उसने 10-10 लाख डाल रखा है। हम्म। ये मैं इंडियन सिनेरियो बता रही हम्म। हूँ। पर कस्टमर एंड पर बैंक द गवर्नमेंट विल गारंटी यू 5 lakhs। अच्छा। जी। अब सेम सिनेरियो, इसको डीसीजीसी स्कीम कहते हैं, हम्म। विच इज देयर इन द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम एंड सेंट्रल बैंक की तरफ से अप्रूव्ड, आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड है अच्छा। डीसीजीसी। ऐसी एफडीसी है विच इज द यूएस बेस्ड, जिसमें वो कहते हैं कि $2.5 लाख इज इंश्योर्ड। अच्छा। अब फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, आपके एक ही अकाउंट है, उसमें आपने 1 करोड़ डाल रखा है, लेकिन हम्म। गवर्नमेंट आपको सिर्फ 5 लाख देगी कि वो बैंक करप्ट हो जाता है। विच इज Which is definitely dangerous and very या इट्स वेरी स्कैरी। और बहुत सारी जो yeah. है आजकल इस किस्म की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बड़ी स्कैरी कहानियां जो है वो चल रही हैं आपके पैसों को लेकर के।
so this threat is real, I believe. The threat is definitely real, but nobody loses the money because अगर आप recently अभी वो देखें Silicon Valley Bank का जो हुआ था, उसमें it was acquired by HSBC, and definitely the government came in and they tried to protect the deposit holders. क्योंकि वहाँ पे FDC एक scheme है, which is the deposit guarantee scheme. Even in UAE also, if you check Dubai Islamic Bank, they have the deposit scheme, which is the Sharia compliant scheme. So ये schemes होती हैं and they basically protect the depositors' money. तो इसमें मैं suggest यही करती हूँ कि everybody should not put all their eggs in one basket, and definitely they should not have like single accounts. And if they have like somebody who can then they trust and they can make them their joint holder, they should do that. Definitely they should do that. And that's a good It's better advice. than paper. Yeah, Yeah. that's a good advice. अच्छा अच्छा, अरीबा ये बताइए कि अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग अगर एक कामयाब कॉन्सेप्ट है तो बिलखुसूस ये जो अपने मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं या ये मान लीजिए कि सऊदी अरब है, तो वहाँ पे भी बहुत ये यानी फोर्सफुली तो फॉलो नहीं होता है। एक आध ही बैंक ऐसा होता है जो कि इस्लामिक फाइनेंस माना जाता है। हमारे यहाँ भी एक ही बैंक है, बाकी के नॉर्मल आपके प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो मतलब क्यों इतना इन्फ्लुएंस, अपने हुक्मरानों को ये क्यों इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए? देखिए मिडिल ईस्ट में जो है majority is expats, right? And these expats are coming from the countries where they trust conventional banks. Because if हम इंडिया के बारे में बात करें, there were like 2 Islamic banks which got started in like 10 years back. And वो सिर्फ एक स्कीम थी and they ran away with like crores of money. And it was like bankrupt and they just disappeared. So people lost their trust over there. They trust Islamic banks because of these reasons. And since conventional banks, they are being there since like ages ago, and they are still being trusted across the globe. So abhi jo hai, it's just a beginning. Problem is the people don't know the details about Islamic banking till today. कि वो कैसे चलता है, प्रॉफिट रेट कहाँ से आता है, लोन का क्या सिस्टम है, ये क्रेडिट कार्ड का क्या सिस्टम है. सो दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज अबाउट इट. सबसे पहले बैंक्स को जो है, ये बैंक्स तो नहीं कर सकते हैं डेफिनेटली, दे कांट लाइक फोकस ऑन एजुकेटिंग पीपल, बट देयर शुड बी समथिंग टू बी डन ऑन एजुकेटिंग पीपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ. मैं तो एक्सिस बैंक में वर्क कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था ये सब चीजें. And this was one of the reasons why I moved to Islamic finance. So it is still the beginning, and Middle East mein it is definitely have started to like gain the popularity among the people, because लोगों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, especially after this crisis period. और लोगों को बताया गया कि देखिए क्राइसिस में इस्लामिक जो था, they were like performing much better than conventional. मैंने जो एक्चुअली रिसर्च की थी वो कन्वेंशनल स्टॉक्स वर्सेस इस्लामिक स्टॉक्स की थी ड्यूरिंग द क्राइसिस पीरियड एंड पोस्ट क्राइसिस पीरियड. सो उसमें जब मैंने वो रिसर्च की थी, सो आई फाउंड अच्छा, ये आउट. क्राइसिस पीरियड ये 2008 का जो ग्लोबल क्रंच आया था। अच्छा, ठीक। एग्जैक्टली 2008 से 2009 वाला जो था, जी जी। तो उसमें जो था कि इस्लामिक स्टॉक्स दे वर परफॉर्मिंग मच बेटर देन द कन्वेंशनल वंस. अभी अगर आप रिसेंटली भी बात करें, लास्ट ईयर की बात मैं बताऊंगी, क्योंकि the company which we have started is an Islamic stocks company, a robo advisory. So over here we have like portfolios of stocks. तो हमने जो पोर्टफोलियोज अपने बनाए थे पिछले साल, द मार्केट वाज डाउन रियली बैडली, कि कन्वेंशनल जो थे दे वर लाइक मेकिंग लाइक अ ह्यूज लॉस. बट जो हमारे पोर्टफोलियोज थे, वी वर गेटिंग अ 7% रिटर्न ऑन दैट. अच्छा, which गुड। was a very good return. And this ओके। was the aggressive portfolio. हमारे पास 3 और portfolios थे, moderate and conservative, जिसमें we were getting 3 to 5% return. जबकि conventional ones, they were going in negative values. So अच्छा। लोगों को समझ आने लगा है थोड़ा थोड़ा, especially in the Middle East. And it's just that the knowledge has to be spread. They just have to be made aware about the importance and the benefits of Islamic finance. That's all.
गुड। चलिए, भारी भारी भरकम बातें, हमने बड़ी टेक्निकल बातें जो है वो करी हैं। आप जो है, मुझे ये पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेटर थी एंड क्रिकेट रन्स इन योर फैमिली, आई नो फॉर श्योर। तो Yeah. तो क्रिकेट चल रहा है अभी या छोड़ दिया? एंड दिस कुड हैव बीन अ वेरी So गुड करियर एज वेल। अब तो क्रिकेट में भी बड़ा जबरदस्त करियर है। तो definitely. आप क्या खेलती थी, मतलब बैटिंग, बॉलिंग या ऑलराउंडर? See, I was an all-rounder. So मैंने स्टार्ट किया था इसको class 11 से. I was the captain of the team for like 3 years. And अच्छा। then during the college days, I got selected for district. जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. It was 2009. Yes, it was 2009. I went for district. जो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि parents will allow me to go for a district match. अच्छा। And I went there. We were the runner-ups. Alhamdulillah, we played the final match against Agra. हम्म। Even this Poolan Devi, she was there actually. And yes, so I've met them. I've met these like current cricket stars. हम्म। So उसके बाद जब मैं वापस आई वहां से, so we went for Hajj actually just after the district match, and then I came back and played a match against the faculty members. हम्म। में ये हुआ कि one of the faculty members, he was a male, he actually hit the ball straight on my head, ओ। and since then I had to leave cricket ओ। because it was very dangerous. I had like a concussion over there, and उसके बाद I had to leave अच्छा। cricket. चलिए, चलिए, चलिए। अच्छा, तो अरीबा, ये कि आपकी तालीम पूरी अलीगढ़ की रही है, एमयू की रही है। तो मैं ये जनरली सवाल सभी से, अपने मेहमानों से पूछता हूँ कि आप की शख्सियत में आप अपने अल्मा मैटर का क्या रोल देखती हैं? डेफिनेटली देखिए, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट पर्सन थी. आई वाज नेवर अ पब्लिक स्पीकर. इन इवन इन स्कूल डेज आई यूज्ड टू रन अवे व्हेन जब पब्लिक स्पीकिंग होती थी. बट सिंस आई जॉइंड एएमयू में यू नीड टू ईदर बिल्ड योर पर्सनालिटी योरसेल्फ. नोबडी इज गोइंग टू स्पून फीड यू. आपको पढ़ना भी खुद ही होता है, पर्सनालिटी भी खुद बनानी होती है, और अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे जाकर. सो स्लोली ग्रेजुअली आफ्टर माय बीए एंड देन एमबीए में एक्चुअली मेरी पब्लिक स्पीकिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस हुआ बिकॉज वहाँ तो प्रेजेंटेशंस देनी होती थी. हम्म। एंड देन ऑब्वियसली व्हेन आई केम इनटू पीएचडी आई हैड टू गिव लेक्चर्स बिकॉज मुझे वो जो 3 साल थे मुझे लेक्चरशिप के दे दिए गए थे. सो उसमें मेरी डेफिनेटली पब्लिक स्पीकिंग हुई. मैंने उसको लर्न किया, एंड दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग ओवर हियर. That is the reason I can talk and Well, represent myself in the alma you are mater. talking quite well, माशाल्लाह। Thank you तो so much. वंडरफुल टॉकिंग टू यू अरीबा, और बहुत सारी दुआएं हैं कि आप बहुत तरक्की करें और अपने कौम का और अपने इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें, एंड स्काई इज द लिमिट। थैंक यू Thank सो you. वेरी मच, एंड टेक केयर, और फिर इंशाल्लाह बात होगी। खुदा Inshallah. हाफिज। Khuda Hafiz.